welcome back to our channel, the Crackon. So today in this session, we'll add some updates for the previous case study we have discussed, right? Operational risk related. So there is one question. Let me show you. So in this question, we need to calculate the risk RWA, right? Here you can see we need to calculate the RWA. One second. Right. So here the formula for the RWA is capital charge divided by minimum vessel to CAR, right? So before that we need to know the CAR. I have already mentioned some important points, basic points for the CAR. Let me discuss some more points and as well as some additional points, right? So here is that capital adequacy ratio. What do you mean by that? Capital adequacy ratio, CAR, is the ratio of a bank's capital in relation to its risk weighted assets and current liabilities. So bank का जो capital रहेगा, that will be ratio with respect to risk weighted asset RWA plus CEL. जितना भी आपका current liabilities रहेगा उसके साथ आपका जो ratio रहेगा, that is capital adequacy ratio, right? So it is decided by the central banks. You can see, so this is decided by the central banks. ये जो CAR है, CAR इसको कौन डिसाइड करता है? Central banks and bank regulators to prevent commercial banks from taking excess leverage and becoming insolvent in the process. Excess leverage means उनका जो भी मतलब whatever the capital they are having, they should not something like give credit to the customers more than the required limit. That means they should have at least some minimum amount of capital so that they can face any types of unfortunate situation like losses and to prevent becoming insolvent, right? So before the insolvent, this CAR percentage of capital will be acting as like will be acting as like one type of last resort, one type of supporting, right? So for this, every Basel has also some percentage of the CAR, and every central bank has the power to decide the CAR percentage. So in case of India, RBI has the power to decide the percentage. So one more important confusion is here, like so before that let me show you here. It is the CAR formula is that tier 1, tier 2, tier 3 capital, that means capital funds divided by risk weighted asset. So आपको we will get the capital adequacy ratio. So by dividing that we will get the capital adequacy ratio. So the risk weighted assets are taken to accounts credit risk. So इसमें हमारा जो है for calculation of the risk weighted asset, so it include all the three risks, that is credit risk, market risk and operational risk, right? So here the main confusion point is that what is the CAR value? So as per the Basel norms, the capital to risk weighted asset, that means CAR has been decided like 8%. That means this is applicable all of it's like internationally 8%. But one additional point is here, that is every central bank has their own power, has the that means flexibility to decide their own CAR, but it should not be less than the 8%, right? It should be more than 8%. कोई भी जो है इंडिया में हो या इंटरनेशनली हो, कोई भी सेंट्रल बैंक अपना CAR परसेंटेज डिसाइड कर सकता है, ठीक है, पर ये जो है आपका 8% कम नहीं होना चाहिए. If we talk about any types of international question, then the percentage will be 8%. If we are answering any types of Indian bank, then the percentage will be something different. Likewise, here you can see, however, in case of as I mentioned कि जैसे कि RBI का है हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है. So in case of India, RBI has decided that is for every Indian scheduled commercial banks are required to maintain a CAR of 9%. That means as per the RBI, what is the CAR percentage? That is 9%, right? So that is 9%. So if the question is asking some types of as per the RBI, you need to calculate the CAR and you need to calculate the RWA, then you need to put the 9%. But if the question is asking something like international things, then you need to put 8%, because this is the minimum criteria. See, here RBI has decided 9% and this is more than 8%, so it should not be less than 8%, right? So that's why. But RBI ने इंडिया का जो कमर्शियल बैंक के लिए
9% मेंटेन करेगा। इसमें एक और है तथा अगर आपका रहेगा आपको क्या पुट करना है, यू नीड टू मेंशन CR एज द 9%, राइट, एंड हियर एज 8%, गॉट इट, if Basel is asking something like international one, right? So while Indian public sector banks are emphasized to maintain a CR of 12%, देखिए RBI ने तो फिक्स कर लिया 9%, बट जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है PSB है, they are emphasized, that means they are maintaining some types of 12%, right? They are maintaining because it's as per the RBI rule, the CAR should not be less than 9%. As per the Basel rule, the CAR should not be 8%, ठीक है? So RBI ने डिसाइड कर लिया आपका 9%, और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को ये वाला मतलब उनके पास पावर रहता है कि उनको बस 9% से ज़्यादा वो कर सकते हैं। दे हैव दैट प्रोविजन कि they can maintain the CR as something like more than 9%. So here Indian public sector banks are emphasized, they are trying to maintain CR of 12%, because the more will be the CR, that will help to withstand any types of unfortunate situations, right? So it's also decreases the chances of insolvent, right? So here is that one type of confusion. So 8% होगा या 9% होगा. Initially before solving that case study I was also thinking 9% or 8%. So I saw in the internet, so I got everywhere 8%. but RBI का था फोल्डर जिसमें के अंदर आपका ये वाला मेंशन है कि as per the RBI जो है ये 9% और इंटरनेशनल बासेल के अनुसार आपका है 8%, ठीक है? सो ये वाला अगर प्रॉब्लम को देखें, लेट मी शो यू दिस। सो इसमें जो भी डिटेल्स दिया गया है, कैपिटल चार्ज एंड उसके बाद है मिनिमम बेसल 2। सो कैपिटल चार्ज हमारा जितना भी आ गया था समथिंग, कैपिटल चार्ज जो भी हमारा वैल्यू आ गया था, ठीक है? सो प्रीवियस वाला केस स्टडी जो है हमने सॉल्व किए थे, यू कैन सी हियर। सो कैपिटल चार्ज जो रहेगा दैट इज समथिंग लाइक, एक सेकेंड, इट्स लाइक 18,000 था, ठीक है? 18,1800, ओके 1800 मल्टीप्लाई विथ डिवाइडेड बाई आपको कितना परसेंटेज होगा। सो हमने जो क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वी हैव टेकन दिस CAR एज 8%, ठीक है? सो इट्स लाइक इंटरनेशनल बैंक मेंशन हुआ है, ठीक है? सो इंटरनेशनल बैंक आजन में भी हो सकता है कि देयर ऑल आर इंटरनेशनल बैंक। सो इफ़ यू थिंक ऑप्शंस में अगर आपको मतलब आप इसको सॉल्व करेगा 8%, इसमें हमें देखिए अगर इंडियन बैंक का मेंशन है आप इसको 9% ले लीजिए, अगर 8% ले लेते हैं सो वी आर गेटिंग द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। वी आर गेटिंग समथिंग लाइक 8% अगर लेते हैं 22500, ठीक है? अगर 9% लेते हैं, लेट मी शो यू दिस एज वेल, कि अगर हम इसमें पकड़ लीजिए CAR को हम 9% ले लेते हैं, ठीक है? फॉर द इंडियन, ये मतलब इंडियन के लिए, जैसे कि इंडियन आज पर RBI हमारा 9% है। सो इसके बाद कैपिटल हो जाएगा आपका 1800 करोड़ था, वहाँ पर हमने कैलकुलेट किए थे, यू कैन सी हियर। सो कैपिटल हो गया हमारा 1800 करोड़ एंड ये हो गया 9%। इसका जो सोल्यूशन है आपको आ जाएगा 20,000 करोड़, राइट? सो इसका जो 20,000 करोड़ मतलब आपका हो जाएगा आंसर बी। सीधी एक यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एंड सी दोनों है, मतलब दोनों ऑप्शन है, 8% के लिए भी आंसर है और 9% के लिए। सो जैसे कि हम इन इंडिया हम वी आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है? और कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है कि RBI और बेसल टर्म, सो एक कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? सो पर इन एग्जाम ये दोनों ऑप्शन शायद ही नहीं रह सकता है, ठीक है? सो नॉर्मली जस्ट टेक द 9%। सो दिस इज वन ऑफ द अपडेट। और so here you can answer this like this, right? So in the book that is something in this book, so वहाँ पर आपका 8% मेंशन था, पर शायद इसीलिए कि इंटरनेशनल बैंक के बारे में मेंशन किया जा रहा है। सो एज पर द बेसल टर्म, अगर इस क्वेश्चन को हम बेसल के अकॉर्डिंगली सोचेंगे देन आपका CR हो जाएगा 8%। अगर इस क्वेश्चन को हम इंडियन एज पर द RBI रूल सोचेंगे देन CR हो जाएगा 9%, ठीक है? सो दोनों में इतना भी नहीं है, बस RBI अगर मेंशन है देन यू नीड टू कैलकुलेट द 9%, ठीक है? सो यही वाला एक अपडेट था। सो होपफुली आप उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है? आप दोनों को याद रखिए अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस, और ऐसे भी मैक्सिमम हाई चांसेस है कि अगर आपका 8-9 एग्जाम में क्या होगा ना, आपका अगर कैपिटल चार्ज नहीं कर रहे हैं 8% 9% दोनों को डालिएगा, जो भी आपका है शायद 9% डालेगा तो ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है? अगर 9% डालने के बाद भी आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, नॉन ऑफ दिस का आंसर नहीं है, NO का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? देन आपको 8% डाल के चेक करना होगा, ठीक है? बस एग्जाम के ओरिएंटेशन के लिए आप वही वाला याद कर सकते हैं। लाइकवाइज आप इसको भी अप्लाई करिएगा, ठीक है? सो होपफुली आपके यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो गया होगा, ठीक है? सो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि अपडेट, तो मेरे को थोड़ा डीपली जाके सर्च करना पड़ा। सो होपफुली यू लाइक दिस, इफ यू लाइक दिस देन डू लाइक से सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कीप प्रिपेयरिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड बाय बाय।